ونسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم Bilal, أنبئهم check the light, check بأسمائهم the light. ولما أنبأهم Check light, بأسمائهم please. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه شجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمتم عليكم وأوفوا بعهدي أوفي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تقولوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتتقوا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم وإذ فرقتم
ومن الذين أشركوا يود أحدهم لا يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من أحياه وانذر جبرائيل فإنه نزعناه على قلبك على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله والملائكة ورسوله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وبعض الظلمان نبعثه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما نبعث فريق من الذين أوتوا الكتاب طاعة الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتخذوا ما تتلو الشياطين على وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس Every time you get a call, وما أنزل على it got disconnected. What is this? Audio. It's not needed. I know, but just keep it inside. I don't want to lose that wire. يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالغالبين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يحزنهم ولا ينفعهم ولقد أحسبوا لمن اشتراه عقله في الآخرة من خلاق بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Good job, Ivan. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا زرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد صل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال بسم الله الرحمن الرحيم قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيها يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم
أنت اليهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فلهم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتك لا ينال أحد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر متعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال لي كم يا سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ويسر يا إبراهيم أني تذكر يا بني إن الله اصطفى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء حضر يعقوب ولا تصلون عما كانوا يعملون قالوا كونوا هودا أو نصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون. आप पढ़ मैडम याद फाइन फाइन आमन وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هدى أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार कुरान जी की तिलावत के दौरान हमसे जो गलती जो कोताही से माफ फरमा और हमें कुरान जी की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने इसके मानी और मकानी को पूरी तरह समझने दर्द करने उस पर पूरी तरह अमल करने की तौफीक और सारे अता फरमा। आमीन। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala khairil khalqihi wa ashrafil bariyati sayyidina wa maulana habibi qulubina طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. First, we have advised you to fast, and we have advised a similar way to the previous nations. You might become pious. Might. There's no guarantee. ईमान वालों, ऐसा ईमान तुम्हारे ऊपर रोज़ इस तरह लिखकर फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुम्हारे पहले वालों पर किए गए थे, शायद तुम इस तरह मुत्तकी बन जाओ। कुरान करीम का महीना माह मुबारक रमज़ान सबको बेतहाशा मुबारकबाद। It might be for some people a bit burden, thinking, how do I stop drinking water? How would I stop, consuming my special fast food dishes? How would I stop smoking? A lot of people would be thinking that as well. So my speeches would be a combination of both Urdu and English, and I would like to deliver something that is beneficial for all of us. Once I leave, you might be able to think that Aga came, gave something, and we remember that. And not only remember that, but to benefit out of it. Especially for the youth who sometimes think our parents are pain. They keep talking about religion, and we don't see any religion in our practical life. There's no religion, there's no usage of religion in our life, which is impossible. Because if something Imam Ali believed in and it's not useful, that's impossible. It's out of question. If Imam Hussain believes in something, Rasul Akram believed in something, 124,000 prophets believed in something, and it's useless, that's impossible. Islam does not have expiry date on it. It's not for some people, brothers and sisters, a lot of secular crowd thinks Islam was for 200 years ago people. People who used to live in villages, used to ride camels. Islam was just for them. It's impossible. Only sector. That means Islam had expiry date on it. Right? Expired, gone, Khuda Hafiz. Now let us live in secular world. Let us have blast party. We're civilized people. We can decide on our own. Get married, don't get married, have, same-sex partnerships. Do whatever you want. Wake up whenever you want. Sleep whenever you want. Eat whatever you want. Consume whatever you want. As long as you're following the state rules, you're good to go. Right? To some extent, it's fine. But not to every extent. So what I would like to do, inshallah, I would like to and try to talk in simple lingo, simple language. So once we get out of this Maha Mubarak, we understand, we grasp something, and we are able to apply it and see the results. So some basic foundation words in the beginning, and inshallah, once we continue our speeches, lectures, it's an honor for me to come here. It's an honor and investment for me for the Akhirah. And I'm here, I'm delivering something, and if because of my words, it's not my words actually, because of the way I'm copying, pasting the stuff from the Ahlul Bayt, from the Quran to you, and it brings change to somebody's life. It's an investment, my friend. It's a huge investment. All of you live in capitalist society and you know what investment means. Brothers and sisters, this life is temporary.
Okay, so once we do an investment, we think, okay, we're gonna get the results, of course. But the real life starts after the qabr. Grave is the exit point. So what I'm trying to do, inshallah, for myself first, and all of you or whoever is listening, wherever and whenever, to gain from the treasures that Allah subhanahu wa ta'ala has left, given to us through Quran, through Aimah alayhi salatu wasalam, through 124,000 Anbiya. So that treasure is not useless. All right. The problem is we are living in a society where religion is the least important thing. Right? So we have not been given the real picture of Islam, which is Tashayyu actually. Tashayyu is the name of Islam. The real Islam is Shia. Tashayyu. Good. So first of all, carve that in your minds and hearts that you're not following someone whose message has expired and was brought for the people who used to live 200 years ago, 114 years ago. ऐसा बिल्कुल नहीं है, absolutely ऐसा नहीं. ये सब fake है. अब problem ये है कि उस निजाम के against we have lots of other systems. So once those systems collide, and they give you, okay, you can consume alcohol, but as long as you consume this much alcohol and you're not considered drunk, you're good to go. For state, that's fine. No, for religion, it's not fine. Religion has absolutely no place for alcohol. Homosexuality, no place. And it's not only Islam. Islam is the continuation of Judaism and Christianity. Islam itself is nothing. Islam is the last product of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? The way Microsoft keeps bringing Windows versions and the previous version fades, new version comes, and the other stuff also expires with it. Islam is something like that. Keeps the continuation of Judaism and Christianity. So all the laws brought by Judaism, Prophet Moses and Prophet Jesus, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam completed that version of divine message and end of the story. Well, now you have tons of other systems, communism, capitalism, socialism, and whatnot. And then once they collide with Islam, you say, the heck, I can't tolerate this. Let me live my life. I want to have relationship with girls. I want to have relationship with boys. I want to live independently. I'm not harming anybody. As long as I'm not harming anybody, system will accept me, which is fine. So we'll inshallah build some foundations and speak about things, the points which can be useful, inshallah. We'll padhenge Muhammad wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Three main points, the foundation I want to build my speeches on. So number one, तीन बुनियादी हकीकतें. Inshallah, you'll enjoy it. The best enjoyment is intellect. No music, no food, no smoking, nothing, I'm telling you. These five senses have very small limits. You're craving for biryani, you're craving for burger, sandwich, pizza, whatnot. Once the stomach is full, you hate it. After that, you say, no, I don't want anymore. Once the stomach is empty, so can I have a slice? Can I have a bite of chicken tikka? When the stomach is full, you're done. So the reality is our existence. Me, you, all of human beings are created two dimensions. One is ruh, one is body. You get mobile phone, right? Laptop, tablets, whatnot. You have a software and you have a hardware. So this is a hardware. Hardware is going to go one day. Hardware is not going to be staying forever. Perishable, gone, Khuda is in the qabr,
Adios. Right? Software stays forever. That's your root. That's your soul. ठीक है? ये एक बहुत अहम चीज है. Most of the investment we do for our bodies. हमारी main concerns body होती है. मेरा कोलेस्ट्रॉल ऊपर हो गया, मेरे हार्ट का इशू हो गया, मुझे जो है शुगर हो गई, मुझे जो स्ट्रेस हो रहा है, कुछ नहीं है, काम की बात नहीं है. इंपॉर्टेंस है बॉडी की, लेकिन अगर मेरी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल ऊपर हो जाए कोई मसला नहीं है. अगर मेरी सोल का कोलेस्ट्रॉल बर्बाद हो गया, ऊपर चला गया, दैट्स फॉरएवर. तो वर्क ऑन योर सोल, टारगेट द सोल. बॉडी इज इंपॉर्टेंट, इट डजंट मीन बॉडी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. It's important. Number one. Crucial thing is your soul. Okay? This life we're spending maximum 90, 100 years is a temporary stopover in this world. Just like a transit airport. We stay here, we spend certain time, and we are out of here. Khuda Hafiz. So we have families, we have kids, we have siblings, we have parents, we have spouses. We get attached to them. We have friends, we get attached to them. Once we leave, it's terrible. It's very difficult. But Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, knows all better. People are in the stomach. If you ask a child who's in the stomach, you want to come out? The child would say, no way, I'm fine here. You don't know what's out here. You would convince the child, right? Him or her. You would say, no, there's a blast party here. He's stuck in a very small place. The child would say, I'm fine here. I get food, I get whatever I need. Hamara bhi aisa hi hai. This world is like a womb. Once we exit from this world, not the body, keep in mind. The soul, once it exits, the pleasure, the enjoyment, the soul feels, has no comparison what you feel now. Similar to what you have in the bomb situation. The dark, small space. You say, no, I'm fine, leave me here. I don't need your advice. Thank you so much. So 2, temporary life. Live here, don't get attached too much. Maulai Kanat, Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib. Imam Ali says, Imam Ali ने फरमाया, इस दुनिया में इस तरह रहो, परमानेंट रहना है. इस दुनिया से इस तरह जाने की तैयारी रखो जैसे कल तुम्हारा एग्जिट होना है. ओके, दैट पैरेलल प्लान. यहाँ रहना भी है, यहाँ से जाना भी है. कैसे करेंगे? मुश्किल है ये. No, Aga, I get attached with things. I don't think about Akhirat anymore. I don't think about leaving from here anymore. You can practice it. You can do anything. I guarantee that. And it's not me. I must say that. Quran said that. You can plan parallel. Example. Suppose you are planning to travel back home for Eid. Right? If you're planning, so you have a ticket ready. You have your luggage. You're doing purchasing. You're doing shopping. At the same time, you're going to the classes. You're going to the jobs. You're doing whatever you want. But at the same time, you have a plan to go to the Pearson airport, to catch your flights. Similar way. Every night you go to bed, think about what you have spent, the way you spent your day. Think about that. Was that correct? Did I earn something for my akhirat? Did I waste all my day? Did I earn everything for this world? But Allah said, it's a core reality. Not only Allah said, it's only me. Quran says that. Imam Ali says that. Plan for your akhirat also. Right? So number 1, Ruh is your core reality. Number 2, the life is temporary. And the last one, extremely important, very crucial. When you speak about different thinkers, you discuss different politicians, ideologies, right? You get confused. One person says there's no akhirat, the other one comes says no, there's akhirat. One says Shia is right, the other says Wahhabi is right. When I study, when I get into these complex discussions, I get confused. What do I do? One person said there's no such thing as religion. Schools, take the schools of arts.
No religion, no nothing. It's all game of power. A lot of ideologies. Okay, whoever goes to the college or have studied some humanities, arts, they would have known this. आप कहते हैं intellectuals discuss करते हैं कोई आखिरत नहीं है. We are the product. We started as a worm. Who says that? The big thinker says that, right? Evolution की theory, right? Human beings were not human being in the beginning. They have been evolved from being a worm to this stage. We were chimpanzees, we are monkeys, whatever not. So you study that, you get convinced, and you get lost. My father says something else, my mom something else, and then Maulana Sahab also comes and bombarded on my brain, says, you are not. And his name is not coming in my mind, if someone can help me. Darwin. Mohtaram Darwin says, we were a kira. We were a worm. Fishing worm. We started as being worm and we evolved to this human structure. Now you say, I go to the college, I go to the university, my professor, my teacher tells me, who has a PhD degree, who's been teaching for 25 years, he cannot be wrong. Right? But Maulana couldn't be wrong either. We trust him. Okay, Maulanas have a lot of versions. Some Maulanas are a little bit. Some are not. Tashayyu, alhamdulillah, I guarantee you, is full of intellectually really grown up ulmas. Pure core realities. So suppose you get stuck with a lot of mutafakkirin, a lot of thinkers and say, I don't understand all this, just let me live my life. Once you get confused between different intellectuals, different ideologies, you have to get out of it somehow. You have to earn a peace. What do you do? This is the last item in my list. Anytime you get stuck, any moment you feel Darwin says something else, Freud says something else, Hegel says something else, Lenin says something else, who is right? The ultimate genius Allah subhanahu wa ta'ala has created is our last prophet, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. तमाम तर मसनूई ज़हीन इंटेलिजेंट लोग जो इंसान को खुदा से दूर करते हैं किसी काम के लिए. Whenever it comes to being, a big thinker, delivering a new theory about humans, about akhirat, about religion, and you get collided, आप सोचें कौन किसकी बात मानूं एक्चुअली. तो आपके लिए फाइनल जो डिसीजन है वो लास्ट प्रॉफिट का है. Nobody else. Yes, you go college, you go to and university, you study everything, get confused. मैं क्या करूं अब? मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं. आपके पास आखिरी स्टेटमेंट रसूल अकरम का है, मौला कायनात का है, आइम अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया का. इन तीन चीजों पर हमारी टोटल फाउंडेशन स्पीचेस की इंशाल्लाह खड़ी है. हम कोशिश करेंगे इससे कुछ आपको मिले. नंबर 1 क्या था? बदन हमारा सेकेंडरी है. बदन, बॉडी इज लाइक अ लिबास ऑन दिस बॉडी. ये लिबास है, रूह असल है, रूह के ऊपर बॉडी होती है. हमारा हम मुकाम, हमारी तमाम तर कोशिशें क्या है? बॉडी बॉडी बॉडी. मेरे नीज को कुछ हो जाए, मेरी आंखें सिक्योर रहे, मेरा कोलेस्ट्रॉल सेट रहे, व्हाटएवर. सफाई निस्फ ईमान है. हाफ ऑफ योर रिलीजन इज क्लीनलीनेस, बीइंग क्लीन. But it doesn't mean you leave Ruh alone. Ruh is your actual existence. And Roza Mubarak Ramzan is related to purely Ruh. Alright? Number 3. Number 2, sorry. Zindagi muaqqat hai. Temporary stay. Airport पर रुके हुए हैं, लंबे चौड़े प्लान ना करें. करें प्लान, keep in mind, any moment you are in the university, the day of convocation, the day of graduation, the angel comes, grabs you, have a nice day. खुदा हाफिज. You're done. मैंने इतनी मेहनत की, इतनी जान मारी, मैंने हाई स्कूल किया इसलिए कि मैं अब्बा कहते हैं ग्रेजुएट हो जाओ, बैचलर कर लो, मास्टर कर लो, पीएचडी कर लो. What is this? Nobody can control this. This is an ultimate divine power at play. Keep this in mind, okay? You, me, and nobody can control that. रसूल अकरम दुनिया से चले गए, इमाम अली चले गए, मैं और आप कुछ भी नहीं. तो इन तीन चीजों को अपने वजूद में अच्छी तरह रासिखन उतार लें. सारी इन्वेस्टमेंट धरी रह जाएगी. क्या शादी, क्या स्टॉक्स, क्या
education, everything. But at the same time, इस life को बहुत delicately गुजारना है. It absolutely doesn't mean you quit your schooling, you just escape, you go to mountains, you know, गिरवान पहाड़ गया, फकीर बन जाए, सूफी बन जाए, दुनिया को छोड़ नहीं. आखिरत बनेगी दुनिया ही से. Delicate balance को maintain रखें. दुरूद पढ़ेंगे. मोहम्मद What is today's fasting time? 7, 8 something? 8 even. So we have about 11 minutes and I have to cover a lot of stuff. So these 3 things, we have to make a plan and keep reminding these 3 things. क्या? Soul, हकीकत है. जिंदगी टेम्परेरी है. और कायनात की जीनियस तरीन, अजीम तरीन, अक्लमंद तरीन, वाइज तरीन, हकीम तरीन हस्ती कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दुरूद पढ़े मोहम्मद. इन 3 पॉइंट्स पर हमारी मेन स्पीचेस खड़ी होंगी और इंशाल्लाह जब माह मुबारक रमजान खत्म होगा, दिल चाहता है कि कभी खत्म ना हो. यकीन कीजिए. It's not. It might be sounding difficult to stop drinking, to stop, you know, not thinking about pizzas and food. But माह मुबारक रमजान जब एंड होगा ना, 2 points. Sensible, wise people would start trying. You see these 2 moons, crescents, माह मुबारक रमजान and then शव्वाल. These are 2 parentheses. ये 2 brackets हैं जिनके दरमियान स्पेशल एनवायरनमेंट होता है, स्पेशल फजा होती है, just like spring, fall and all that. These 2 brackets have a specific special environment, unique फजा. ये रिपीट नहीं होगी सारा साल. You keep trying and fasting for the rest of the month, you won't be able to. This is a special blessing Allah subhanahu wa ta'ala gave us in this Maah Mubarak. तो हमारे लिए इस फजा से अपॉर्चुनिटी से इस्तेफादा करना, take it as a countdown, not as a stress or pressure. This is 1 roza that you fasted today, 29 maybe more to go. Take it as a, oh, sale आती है ना, buy 1 get 2 3 free whatever. Oh, खत्म हो रही है सेल का टाइम, हमें जाना है, मुझे बाबा मुझे जाना है, बंद हो जाएगा वॉलमार्ट, बंद हो जाएगा बेस्ट वे, बंद हो जाएगा ब्ला ब्ला, अमेज़न पे डील आई है 12 घंटे के लिए. काउंटडाउन की तरह ले हमारे रमजान चला जा रहा है. I've lost 1 fast already. I've lost 1 day of fasting, 1 night of worship. I've already wasted. Another one is coming. The next one is coming. So अपनी रूह को फैच करने के लिए, अपनी रूह को तरोताजा करने के लिए, फ्रेश करने के लिए माह मुबारक रमजान. Out of 12 months, you have 1 month just for this purpose. You might be saying, Maulana, come on, yeah, just finish it up. No, I'm finishing it up, of course, few more minutes, but I'm reminding you, first of all, to myself. Because at the end of the day, once we are all done, this story finishes, universe is gone, we are sitting where? Roze Mahshar. Maulana Imam Zaman हमारे साथ होंगे, इमाम अली हमारे साथ होंगे, जनाब सैयद हमारे साथ होंगे. उस वक्त वो पूछेंगी कि तुम्हें सही पैगाम मिला था कभी इस दुनिया में? Lot of people would say no, सही पैगाम नहीं आया था. मजलिस होती थी, हुआ होती थी, खूब नारे लगते थे, खत्म हो जाता था. We never grabbed anything. Maulana said religion is good, but on practical grounds, nobody explained us dot to dot. ऐसे होगा, ऐसा वैसा. तो सोल को फैच करना है, तरोताजा रखना है. रसूल अकरम का एक खूबसूरत जुमला है, हदीस है मौला से, जो मोस्ट फेवरेट चीजें थी रसूल अकरम की, उनमें से एक चीज क्या थी आपको पता है? भूख. मेडिकल साइंस प्रूव्स इट. Once your hungry stomach is empty, brain functions well. Modern science says you fast for 2 weeks, 1 week, your immune system rebuilds itself. You got a new immune system, brand new. Modern science says that. Modern doctor says no, don't worry, बच्चा भी छोटा, इसको रोजा नहीं रखवाओ. आपका कोलेजन किससे हो गया? रसूल अकरम से.
डॉक्टर के नहीं रोजा नहीं रखना, अभी बीमार है, व्हाटएवर, छोटा है, बच्ची छोटी है अभी, यस देयर इज अ स्पेस देयर आर रीजंस, हो सकता है वो मना करना सही हो उसको, लेकिन बहुत से बड़े ऐसे हैं, एडल्ट हैं, वो रोजे नहीं रख रहे, उनकी समझ में नहीं आ रही बात, डॉक्टर ने मुझे मना किया। जहन्नम में जाएगा डॉक्टर जो रसूल की नजर से टकराता है। एंड ऑफ द स्टोरी। रसूल ने पैकेज दिया तुम्हारे इस जिंदगी के लिए नहीं, 30 80 90 इयर्स के लिए नहीं, परमानेंट लाइफ के लिए तुम्हें पैकेज दिया। ये डॉक्टर वॉक इन क्लिनिक्स टेम्परेरी है सारी, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम, इट्स नॉट ब्लैबरिंग, आई एम नॉट, ये सब हवा में नहीं हो रही बातें, ये प्रैक्टिकल्स हैं। आप करें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको मुकाशफे होंगे, आपको आखिरत की चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, आपको मकाम बरज़ख नजर आएगा अपना। And then just like movies, you'll dream and you'll see reality. फिर आपको चीजें, ये होगा सिर्फ इस बदन की कैद से बाहर आने के बाद। बॉडी जो हमारी 5 सेंसेस में लॉक है, राइट, हवासे खमसा में आप लॉक है, that's all you have to comprehend things. The far superior thing, that's your soul. उस सोल के जरिए जब कॉम्प्रीहेंड करेंगे चीजों को, उस सोल को के लेवल को अचीव करने के लिए, उस कमाल को अटेन करने के लिए, इस भूख प्यास के टॉर्चर को, इस अजियत को, इस बूट कैंप को गुजारना बहुत जरूरी है। इसलिए रसूल ने कहा वाजिब है, ऑप्शनल नहीं है, मुस्तहब नहीं है रोजा रखना, वाजिब है। 1 महीने का बूट कैंप एंड यू आर आउट ऑफ दिस फिजिकल लेयर। Once you are out of this physical layer, no music you would enjoy ever, no food, you would wait for barzakh and akhirah, that pleasure inshallah. दुरूद पढ़िए मोहम्मद ये किताब हर शिया मुसलमान के घर में होनी चाहिए। ये किताब हर उर्दू इंग्लिश रीड करने वाले घर में, ये दुआएं हैं मौलाना मोहम्मद सज्जाद अलैहिस्सलाम की। इसमें कुछ ऐसी दुआएं जो आप पढ़ेंगे तो डिकोड करेंगे आप अपनी प्रॉब्लम्स को। तो इसमें एक दुआ है, दुआ इस्तक़बाल माह मुबारक रमजान, वो मैं आपके सामने थोड़ी सी क्विकली पढ़ दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली इन उर्दू, और बाद में इंशाल्लाह दुआए माह इस्तक़बाल माह मुबारक रमजान, हाउ टू ग्रीट वेलकम माह मुबारक रमजान। इसमें मौलाना कुछ कोड्स खोलें, दुरूद पढ़ेंगे एक मरतबा। तमाम तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, जिसने अपनी हम और सिफात की तरफ हमारी रहनुमाई की, जिसने हमें ये रिवॉर्ड दिया कि हम उसको समझ सकें और हमें अपने हम गुजारों में से करार दिया, ताकि हम उसके एहसानात पर शुक्र करने वालों में महसूब हो, काउंट किए जाए। We were thankful Allah subhanahu wa ta'ala whatever you gave us. You created us as being human being, not a dog, not a rock, not a plant. उसके शुक्र करने वालों में महसूब हो, काउंट किया, हमें उसके शुक्र के बदले में नेकी कारों का अज्र दे। उस अल्लाह के लिए हम तो सताइश है जिसने हमें अपना दीन अता किया, अल्टीमेट प्लान, नो कैपिटलिज्म, नो सोशलिज्म, नो कम्युनिज्म, इस्लाम, ठीक, वो दीन। और ये इस्लाम मैंने अर्ज किया कंटिन्यूएशन है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म की, और अपनी मिल्लत में से करार दिया, मुसलमान शिया बनाया, खुदा पर यकीन रखने वाला, और ये इम्तियाज सुपीरियरिटी हमें दी और अपने लुत्फ एहसान की राहों पर चलाया, ताकि हम उसके फजल व एहसान से और करम से उन रास्तों पर चलकर उसकी खुशनुदी, उसके प्लेजर तक पहुंच सकें। ऐसी हम जिसे खुदा कबूल फरमाए और जिसकी वजह से हम से वो राजी हो जाए। किसी से किसी का राजी होना आसान नहीं है। Kids especially, you are not in agreement with your parents most of the time. So are the parents. Parents don't agree with kids, kids don't agree with parents. कोई खुदा हमसे राजी हो जाए, वो नेमतें मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकते। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने लुत्फ व एहसान के रास्तों में से एक रास्ता अपना महीना करार दिया। ये ह्यूज फेवर है आप लोगों के लिए, खुदा ने आपको ये ब्लेसिंग से नवाजा है। यानी रमजान का महीना, सयाम का महीना, भूख और प्यास से दूरी का महीना, इस्लाम का महीना, पाकीज़गी का महीना, साफ सुथरे रहने का महीना। जो लीस्ट एहतराम है इस माह मुबारक का वो ये है कि खाना पीना बंद कर दिया जाए, ये लीस्ट है। जो लोग रोजे फॉर व्हाटएवर रीजंस नहीं रख सकते, वो ये ना समझे कि सिर्फ भूख प्यास ही माह रमजान का
से अचीव किया जा सकता है। एब्सोल्युटली मिसअंडरस्टैंडिंग। बेतहाशा इबादतें इस माह मुबारक से इस्तेफादा किया जा रहा है। तस्फीह और ततहीर का महीना, इबादत और क़याम का महीना, वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए रहनुमा है, हिदायत और हक व बातिल के इम्तियाज की रोशन सदाकतें रखता है, यानी वो कुरान। आप जानते हैं अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम वर्ल्ड का, मुफक्किरीन का, थिंकर्स का। अल्लामा इकबाल कहते हैं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कुरान। इतनी बड़ी फिगर, इतनी बड़ी शख्सियत कहता है I had no clue what Quran talks about. How did he figure out what Quran is about? You know what he said? He said, Dars Quran, Ramz Quran, Raz Quran, Ra'az Karbala Mufti. मैंने कुरान का राज करबला से सीखा। समझो इतना गहरा स्टेटमेंट है। तो आपके नसीब है कि आपको हुसैन मिला, तो नसीब है कि आपको करबला मिली, तो नसीब है कि आपको ज़दारी सैयद शुहदा का अजीम खजाना मिला। वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए रहनुमा है, हिदायत और हक़ व बातिल के इम्तियाज की रोशन सदाकतें रखता है। चुनांचे तमाम महीनों पर उसकी फजीलतें और बरतरी को आश्कार किया। इन फरावा इज्जतों और तमाम फजीलतों की वजह से जो उसके लिए करार दी और उसकी अजमत के लिए जो चीज दूसरे महीने में जायज थी, इस महीने में हराम कर दी। तो जान मोहतरम, खुदावंद ताला से दुआ करते हैं कि वो इस माह मुबारक की बरकत, इस अजीम फेवर को जो उसने हमें दिया है, हम पर ये खूबसूरत अंदाज से रोजे रखने का वाजिब अमल हमको खुदावंद मुताल ने अता किया, इसको प्रेशर की तरह ना लें, बल्कि इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लें, एक मौका गनीमत जाने कि जब रोजे महशर हम सब खड़े होंगे खुदा के सामने, तो हम फख्र से कह सकें, खुदा तूने जो अहकामात हमें दिए थे हमने उन पे अमल किया, जैसे तैसा किया। यस, हम इंतजार करते कि कब पकौड़े आएंगे, कब छोले आएंगे, लेकिन हम भूखे फिर गिरे, हम प्यासे फिर गिरे। सख्त खुदा ने मुताल हमें इस माह मुबारक से सही मायने में इस्तिफादे की तौफीक से नवाजे, हमारे दिलों को अहले बैत के इश्क से नवाज दे, हमारी औलादों को इश्क अहले बैत पर कायम रखे, उलमा का साया हमारे सरों पर कायम रखे, इनकलाब इस्लामी की हिफाजत करे मेरा मालिक। खुदा ने मुताल मराजीन का साया हमारे सरों पर कायम रखे, जीडीए के मोमिनीन के दिलों को एक दूसरे के लिए मोहब्बत से पुर फरमा दे, हमारी औलादों को अपने माँ बाप का मुती बना दे, हमारे इमाम का ज़बूर जल्द से जल्द फरमा दे, हमें अपने इमाम के अंसारान और आवाम में शामिल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।